मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है
पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
actually putting out all there, addressing number one Vishwakarma. That is the worker class as a whole, as a community, the people who have worked, and aspirational India he spoke about. Women, he talked about millets and clean energy and a green budget. He talked about the middle classes giving something, and he called them today the people who are actually laying the foundation of building a new India. So the connect with the middle classes. So there are many political stories that he addressed, and he's a master communicator. You'll have to hand him that. Dr. Surjit Bhalla, okay, you're impressed? Bijon Mishra, you are a Modi Bhakt. You are a Modi Bhakt. People will say, let people say I am an apolitical person, so I would not get into the politics of who is saying what. I want to say, as a consumer representative who sits on your panel, and after listening to the experts, that it is also to do with enabling factors. It's not only empowerment. You see, you empower people when you make enabling decisions, and enabling decisions have been taken which will encourage people to have more disposable income. And with that saving, like women power, they were not at all looked after in our country. Let me be very candid about that. This is the government which looks after them now. They are telling them that you will generate employment. For us. Sorry? You're important for us. You are important for us. And it is important for the country. If the country has to grow, women empowerment is extremely important in our country, who were always neglected. So you can imagine, if that purchasing power within women community comes in our country, where it will grow, the way it will grow, all these investments which we are talking about. See, I am all the time thinking about that, how do we ensure that the states get more accountability? Because you see, the allocation which he has done now, our Honorable Finance Minister, she has done an extremely, again a woman. A woman takes that leadership. You see, what a great budget she has done. What is in that budget? It shows that where you have not been able to spend, don't put allocation there. Put it in some new innovative way. Put it in such a place where it can be used. You see, all these farmers, that debate which was going on, with those political leaders, they never mentioned that allocation got reduced because it never got utilized. I know at least about, Fasal Bima Yojana. Most of the state governments did not utilize, did not empower the farmers to get that product. And that is what triggered the thought process that we need to think of innovative manner how to encourage entrepreneurs to get into farming business. Youngsters, the youths, you see, it's completely innovative, let me tell you. Highly creative. And what I am really telling you is, Navika, I am not any political this thing, but what the Prime Minister has captured is directly, in a simple language, his vision. He wants to see Amrit Kal coming into India. He wants to show the world that we mean business, and we are going to do solid business because we have got the highest consumption in the world. So we will show the world that our consumers are today getting empowered slowly to ensure that our economy becomes third, you say fourth, fifth, whatever, wherever we are. But we will reach the 5 trillion economy very soon. Well said, and that's what the Prime Minister has addressed. Women, he's addressed youth, he's addressed the education challenges, he's addressed the labor force of this country. He's also addressed a full community out there in the world, talking about the green growth component in this budget, telling them that India is serious about this. Quality of life, along with ease of living and ease of doing business, it's quality of life and saving the planet. And that also happens to be the theme of the G20 presidency this year. So he's wrapped it up. He's given that roadmap of India at 2047, which is the Amrit Kal, and he's called it an Amrit Kal budget. Gautam Chikramane, I mean, politics apart, the fact is that even people like Shashi Tharoor came out and could not find too much to
criticize. You talk about Hasib Drabu, probably not from the same stable as the BJP and the Prime Minister, but cannot find much to question. Samajwadi Party leader was with us, could not find much to. Now, rhetorically, you can say whatever you want to say, but there has been something for everybody, for every sector, for every segment, with the big picture and the roadmap not being disturbed. Now, that, do you think, was the Herculean ask, and it's been delivered? I think every budget does that. There are these fixed paragraphs. The first 5 paragraphs will be on agriculture. Next 5 will be on vision statements. Next will be on industry, and so on. So I think there is a formula to the budget, which this budget has also gone plus minus. No, but every budget doesn't pay so much attention to increasing farm loans and to increase capital in infrastructure for. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm saying in the delivery of the budget, everybody is always. Delivery and format is fine. But I'm saying the substance, to say this for every segment, there is something specific for every sector. Am I wrong, Dr. Bhalla? No, I think it's the content. It's the content more than the structure of the budget. Yeah. Look, I think the driving content of this budget, to me, for now, in the first reading and listening, is growth. And I think growth will deliver the other components that we have been discussing in the pre-budget here. For instance, jobs. For instance, wealth. Mamata Banerjee has said startups. Nothing for jobs in the budget. So that's again, you're pulling me back into politics, which I'm there is no life without politics, my friend, in a democracy. I'm just saying that the focus on growth. Don't you vote? But healthy politics. The focus on growth is so much that it will take all the other ships. For instance, let me give you another example. I think you and I, we started our professional lives about the same year. I started in 1992. You must have been 1 or 2 years here, little here and there. Before you, right? yes. I'm your senior. Since you may then, want to call me Navika ji. Since then, haven't you seen every person around you rise over the last 30 years? What happened 30 years ago? Economic reforms happened. Yeah. Haven't you seen all the boats rise? I think we are in part of that same process. Not this particular budget, but this entire approach to budget making from 2014, 15. It's a like I said, it's a budget in motion. It's continuing, and I think after the last 2 years of risk management or wading through economic hardships, we are now back to growth. I see growth happening. I see global capital coming. I see jobs being created, startups. I also see that the urban infrastructure needed to support expats or top quality manpower, thinkers, writers, software developers, entrepreneurs, startup people also will have to rise. Right now, our urban infrastructure, civic amenities is below par. Our universities. But if you read the fine print, town planning has been given, some incentives. I know, but it's going to take some time. It will, but I'm saying the roadmap is there. We need to look at this budget work in progress. As a work in progress towards that direction, but definitely underlined by growth. Well, Rajiv Mantri, I'll come back to you when we come back, because it's great to have Mantri in your name and Mantri's point of view. But we'll take a short break at this point. When we come back, more on the messaging of the budget, especially without going overboard, delivering something to every segment of the society in an election year. Would you call it a smart budget? That debate after the break. What's up, guys? It's a great day. It's a beautiful day. और आप सब all right, this is not your vlog, Akash. This is Gadget Times. I welcome you all. I am Pavni Jain, and this is our very special series where we are collaborating with different people on a variety of topics to bring the best for you guys, right from the experts. So today we have with us is Akash Malhotra, aka Wonder with Sky.
and he is somebody who creates insane and crazy travel content, goes to offbeat places and also does a lot of off-roading. ऑफ-रोडिंग पे मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया था क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैवल कंटेंट कैप्चर करना becomes a little bit tricky, but this guy, he does it very right. This is why today's video is on how to use an action camera like a pro, featuring Akash Malhotra, because it is easier to wander with Sky, but it is not easy to wonder how to use an action camera. Come on guys, right? अच्छा था. Alright, so to begin with, which is your go-to action camera, your most